Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome again to the KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 11 for second year class, and in this lecture we will discuss chapter number 5 of the novel Mr. Chips. As we have read some part of the lecture of the chapter in our previous lecture, so today we will see the remaining part. As in the previous lecture we have read about Catherine's habits and that she liked the profession of Mr. Chips very much. यानी वो उनसे कहती है कि मुझे आपके उस्ताद होने पर बहुत फ़ख्र है और जो कुछ आप हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. नाउ लेट्स सी व्हाट डिड मिस्टर चिप से इन द रिप्लाई. चिप said he had not thought of it like that, or at least not often. तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि उन्होंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, और अगर सोचा भी है तो बहुत कम दफ़ा ऐसा हुआ है. ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना पूरा जो अपनी पूरी कोशिश जो है वो करते रहे हैं. एंड दैट वाज ऑल एनी वन कुड डू इन एनी जॉब, और यही वो चीज़ है जो कि कोई भी अपनी नौकरी में कर सकता है. येस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट. जी हाँ वाकई चिप्स, इस तरह की सीधी सादी बातें करने पर मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. एंड वन मॉर्निंग another memory gem clear when he turned to it. He had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself and all his attainments. यानी और एक सुबह हीरे की तरह शफाफ एक और याद जब वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ. यानी मिस्टर चिप्स जो हैं वो कैथराइन की ही यादों में खोए रहते हैं और उनको हमेशा से ये लगता था कि वो कभी भी जो है तरक्की नहीं कर सकते. अपने आप को वो किसी वजह से हकीर समझते थे और अपने तमाम कारनामों को भी वो हकीर ही समझते थे और वो अपने आप को हकीर समझने के अजाब में मुब्तला थे. He had told her of her only mediocre degree. उन्होंने कैथराइन को अपनी औसत दर्जे की जो डिग्री है उसके बारे में बताया हुआ था. Of his occasional difficulties of discipline, of the certainty that he would never get a promotion, और अपने नज़्म ज़ब्त के हवाले से वक्तन फ़वक्तन पेश आ जाने वाली जो मुश्किलात थी उनके बारे में भी बताया हुआ था, और ये कि वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा. एंड ऑफ हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी टू मैरी आ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और ये भी कि वो कभी भी किसी नौजवान और तरक्की की ख्वाहिशमंद लड़की से शादी करने का ख़ुद को अहल नहीं समझते थे. और ये सारी बातें जो हैं उन्होंने कैथराइन को बता रखी थी. एंड नाउ एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर. यानी जब मिस्टर चिप्स ने इन सारी बातों के बारे में कैथराइन को बताया था कि वो किस तरह से अपने आप को हकीर समझते थे और उनको ऐसा लगता था कि वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और ना ही वो किसी अच्छी नौजवान लड़की से शादी कर सकते थे, वो खुद को इस चीज़ का अहल नहीं समझते थे, तो इन सब के जवाब में कैथराइन जो है उसने क्या किया, वो सिर्फ हंसी थी, मुस्कुराई थी. यानी उसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो माजी में क्या सोचते रहे हैं. शी हैड नो पेरेंट्स, उसके वालिदैन नहीं थे. एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग. यानी उसके माँ बाप जो हैं वो वफात पा चुके थे और उसकी शादी जो है, उसकी रुखसती जो है वो एलिंग के घर से, एलिंग में उसकी आंटी के घर से हुई थी. ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, when Chips left the house to return to his hotel, she said with more gravity. शादी से एक रात कबल जब चिप्स होटल वापस जाने के लिए उसके घर से जाने लगा, यानी उसकी आंटी के घर से जाने लगा, तो कैथरीन ने मजाक के साथ संजीदगी में कहा, दिस इज़ एन ओकेजन यू नो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू. यानी एक दूसरे को अलविदा कहने का, खुदा हाफिज़ कहने का ये आखिरी मौका है, यानी इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी. और
کیتھرین کہتی ہے کہ میں خود کو ایسے لڑکے کی طرح محسوس کر رہی ہوں جو آپ کے ساتھ نیا تعلیمی سال شروع کرنے والا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹ کی طرح محسوس کر رہی ہوں جس کو آپ ایک نیا دور جو ہے وہ شروع کروانے والے ہیں، جو ایک نئے دور میں آپ کے ساتھ ہوگا. Not scared, mind you, but just for once in a thoroughly respectful mood. اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں، بلکہ صرف یہی وہ موقع ہے جب میں مکمل طور پر مؤدب انداز میں موجود ہوں. Shall I call you sir؟ کیا میں آپ کو سر کہہ کر بلا سکتی ہوں؟ اور would Mr. Chips be the right thing؟ یا مسٹر چپس کہنا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. مسٹر چپس I think goodbye. دین گڈ بائی مسٹر چپس. میرا خیال ہے کہ مسٹر چپس کہنا ہی ٹھیک ہوگا. تو مسٹر چپس اللہ حافظ، الوداع مسٹر چپس، یعنی وہ ان کو مسٹر چپس کہہ کے پکارتی ہے. آ ہینڈسم کلاپ کلاپنگ ان دا روڈ وے، گرین پیل گیس لیمپ فلکرنگ آن دا ویٹ پیومنٹ، نیو بوائز شاؤٹنگ سم تھنگ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ، شرلاک ہومز ان بیکر اسٹریٹ، گڈ بائی مسٹر چپس. اب کیا ہے کہ یہ الفاظ یاد آتے ہی مسٹر چپس جو ہیں ان کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے، یعنی اب ان کو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ 2 پہیوں والی ایک گھوڑا گاڑی سڑک پر ٹپ ٹپ کرتی جا رہی ہے، اور زرد مائل سبز گیس کے لیمپ جو ہیں وہ گیلے فٹ پاتھ پہ چمک رہے تھے. اخبار فروش لڑکے جو ہیں وہ جنوبی افریقہ کے بارے میں شرلاک ہومز کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ مسٹر چپس کے ذہن میں صرف ایک ہی فکرہ جو ہے وہ گھوم رہا تھا، الوداع مسٹر چپس، الوداع مسٹر چپس. یعنی مسٹر چپس ظاہری طور پہ ان کی توجہ اس طرف بھی ہے کہ باہر کا ماحول کیسا ہے، لیکن وہ اس ماحول سے بالکل بے نیاز ہیں. ان کی توجہ جو ہے وہ ابھی بھی بہت سال پہلے کیتھرین کے بولے ہوئے فقرات میں جو ہے وہ اسی میں کھوئی ہوئی ہے جب اس نے کہا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس، الوداع مسٹر چپس. So students, we have finished chapter number 5 in this lecture, and the thing you are to do is to make the questions from this chapter. We can make the questions like, how did Catherine respond when Chips told him about his past? How was the degree of the teacher named as Mr. Chips? What was the degree of Mr. Chips? And we can also have the question, what was the condition outside when Mr. Chips was thinking about Catherine? Where did they marry each other? And what is the name of the city in which they got married, etc. So students, you will write the questions and then you will answer them yourself. You are to make the questions from the text yourself. So students, now you will practice the questions, and you can have the reflection of this chapter only when you would be able to make the questions yourself. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.